Hello, guys. A very good evening, good afternoon, good morning to everyone. How are you all doing? कैसे हैं आप लोग? Very good. My audio video is clear, everything? Namaste, namaste, guys. So, audio video, everything is fine? Yes. Okay, wonderful. So, welcome to one amazing, extraordinary session on the cooling towers. Why amazing? Because here, cooling tower is just one topic, but you will learn many things. Okay, many concepts related to heat transfer, mass transfer. Basically, you will be able to revise them. Okay, and if you are doing the preparations for GATE and PSUs, so obviously you need to learn all these things. तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा. And the extraordinary because, as you can see the title, it is the heartbeat of the industry. मतलब if cooling towers are not there, no industry can work on the highest efficiency. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर कूलिंग टावर नहीं होंगे तो कोई भी इंडस्ट्री अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पे मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर ही नहीं सकती. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर सेइंग दिस. तो एक सिंपल एग्जांपल से रिलेट करते हैं. यू गाइस हैव यूज मोबाइल फोन्स, tablets, laptops, etc. So many electronic gadgets you use nowadays. Tell me one thing. If there is a problem of overheating, then if there is a overheating issue, then what happens to the performance of these gadgets? जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, if there is overheating, what will happen? They will slow down. They will not work as smooth as you know as they do. Okay, and the similarly in industries, so many processes, so many equipments are there. Heat transfer operations, mass transfer operations are involved. Transport of energy is involved. To understand this, if cooling towers are not there, if cooling towers are not there, then what will happen? All the streams, everything which are being used, we will not be able to cool down those streams. And when we will not be able to cool down the streams, then what? You know, क्या होगा? वो जो plants हैं, वो equipments हैं, you will not be able to cool down those streams. So overheating issue will be there. So that will affect the performance. That will affect the efficiency. Are you understanding this? For understanding purpose, let me show you two diagrams before we start this. You know, the main source in life, the main source of life is energy. And we are living in this country, in the world. Can you imagine life without electricity now? Tell me. If electricity is not there, can you imagine the life?
हीट एक्सचेंजर्स आप यूज कर रहे हो फहीम, बट द पॉइंट इज एक हॉट स्ट्रीम है, आपने हीट एक्सचेंजर लगाया, उसमें आपने कोल्ड फ्लूइड भेजा, कोल्ड फ्लूइड ने हीट एक्सट्रैक्ट करी, नाउ कोल्ड फ्लूइड विल बिकम द हॉट फ्लूइड। अब उस हॉट फ्लूइड का क्या करोगे? उसे कोल्ड डाउन करने के लिए एक और हीट एक्सचेंजर यूज करोगे। आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है। यस, वी कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट electricity. So power plants are there. Like you see, this is one diagram of a thermal power plant. In thermal power plants, what they do, there is a boiler. They send the coal, diesel, or other fuels are being used. Then, due to the burning of those fuel, due to the combustion, heat will release. That heat is utilized to convert the water into steam, as you can see on your screen. Okay. Now this steam goes into a turbine, correct? Where the turbine converts the heat energy of the steam into mechanical energy. And then there is a generator which converts the mechanical energy coming from the turbine into electrical energy, correct? And that electrical energy is supplied to the users, applications. Now in this entire power plant, one important component is the cooling tower. Because in cooling tower, in turbine, we are sending the steam, it will expand. So that exhausted steam leaving the turbine is introduced into a condenser, where the remaining portion of the heat, or some waste heat, you can say, the heat which is converted to work, that is fine. And the heat which is not able to convert into the work, that is the rejected heat. If you know the second law of thermodynamics, पढ़ा होगा ना आपने, second law of thermodynamics क्या है? इन टर्बाइन्स और मशीन एंड वॉट, ठीक है, कोई भी मशीन है उसमें आपने से हीट इंजन होते हैं, हीट गया, हीट रिजेक्ट हुआ, और यहाँ से वर्क प्रोड्यूस हुआ, करेक्ट? तो ये रिजेक्टेड हीट, वेस्ट हीट क्या है, विच इज कमिंग फ्रॉम द टर्बाइन, दिस रिजेक्टेड हीट इज यूज्ड, consumed in the condenser, just like that. Okay, where the extra heat, waste heat, we remove with the help of cooling water or any other coolant. So this cooling water enters, removes that waste heat, becomes warm, and now this warm water enters into the cooling towers, where it comes in contact with the air. All the process happen. What process we will see, and again cooling water produce. Okay, I hope you are understanding. अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लो, because most of you are preparing for BARC and NPCIL interviews, so you should know that. This is the diagram of a nuclear power plant. Here you can, based on this reactor, can you tell me this is what, pressurized water reactor or boiling water reactor? This is pressurized water reactor, where the simple difference is, in pressurized water, this is the nuclear reactor. Reaction will occur, energy will release. Now, usually heavy water is present in the reactors, D2O, and that D2O will absorb the heat released by the reaction. Then this heavy water introduced into a heat exchanger, where this heavy water comes in contact with the normal water. It transfer all the energy it received from the reaction, nuclear reaction, to that water, and heavy water returns to the reactor. And then this energy, cold water receive this energy, converts into steam, and then this steam enters into the turbine. Okay. So you can understand this steam is not in direct contact with the nuclear reactor.
So the chances of having radioactive radiation, harmful radiation, or in the steam will be less. This is pressurized water reactor. But if we talk about the boiling water reactor, so what happens in boiling water reactor? Instead of using heavy water, we directly use normal water here. Normal water direct absorb the energy, converts into the steam. So when normal water is in direct contact with the reactor, that reaction, so the chances of having radioactive waste in that normal water in the stream produced will be high. Okay, तो वो boiling water reactor होता है. That's how you can understand. उसका भी हमने एक separate session लिया था. आप चाहो तो देख सकते हो. नहीं तो बता देना. I will share the link. The people who are preparing for NPCIL interview, you definitely need to know about all these things. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं. Guys, here, then again the same process: steam, turbine, mechanical energy, generator, electrical energy, and the exhaust steam, waste heat removed by cold water, which become warm and then goes to the cooling towers. समझ रहे हो? तो अब यहाँ देखो, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता तो इस स्टीम में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस होने के, रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन होने के चांसेस ज्यादा होते. एंड इफ रेडिएशन ज्यादा होता तो ये जो एग्जॉस्ट स्टीम है इसमें भी रेडियो एक्टिव ट्रेसेस एलिमेंट्स हो सकते थे. और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फिर कूलिंग वाटर में, हॉट वाटर में ट्रांसफर होके यहाँ कूलिंग टावर के थ्रू एटमॉस्फेयर में जा सकते थे. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझ नहीं होती, बट यू कैन अंडरस्टैंड अल्टीमेटली कूलिंग टावर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पिंग द streams, different streams of the plant, of the industry, to stay cool, to remove the waste heat, to remove the excessive heat, so that there is no problem of overheating and they can run on the smooth, they can run as smooth as possible with normal efficiency, means maximum efficiency. Overheating will reduce the efficiency, you know that. So I hope all you are understanding all these things. Sir, can't convert all heat into work. Yes, second law of thermodynamics. So this is the importance of cooling tower. I hope it is clear to everyone. ठीक है? Why cooling towers are important? Why we say they are the heart of the industry? दिल की धड़कन, heartbeat. क्योंकि heartbeat नहीं होगी तो कैसे चलेगा? Same. Cooling tower नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? Now let's understand. If you guys are ready, shall we start? Let me know when you are ready. We will start the discussion. Are you guys ready? Yes. Okay. So let's go. पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरव्यू में कूलिंग टावर्स के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो दैट जब हम सेशन डिस्कस करेंगे आपको पहले ही आइडिया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड देन ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, आई विल नॉट से ऑल, बट यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर. Like common interview question: what is a cooling tower? What is the primary function in nuclear power plant? What are the different types of cooling towers? Explain the difference between natural draft or mechanical draft cooling towers. What is the difference between wet and dry cooling towers? Okay, when you use them one over another. What are the key components of the cooling towers? What is the function of each of the component? And define the following terms like approach, range, cooling tower effectiveness, etc. ठीक है, explain the heat transfer mechanism involved in the cooling tower. How does the wet bulb temperature play one important role in the cooling tower performance or the designing? What is the significance of Merkel equation in cooling tower design? Okay, how would you calculate the number of transfer units in a cooling tower? पढ़ा होगा ना आपने, mass transfer, gas absorption, STU NTU concept. तो in cooling tower में NTU कैसे calculate करेंगे? What is the LMTD in cooling tower? How can we calculate that? Its application, significance, etc. What factors we consider when designing a cooling tower for a nuclear plant or in industry?
What are the factors affect the cooling tower performance? What is the role of a fill material in cooling tower? How will you size the cooling tower for a given heat load? Size of a cooling tower means mechanical design basically, sizing. ठीक है, environmental impacts क्या हो सकते हैं cooling towers के, etc. And these are some other questions you can see. ठीक है, तो we will see all these things. अभी थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी टाइप, कि आपसे सीधा ये सब कहानी ना पूछ के सीधा बात कर सकते हैं. If a cooling tower is underperforming, how will you diagnose the issue? ठीक है, otherwise they can say that suppose there is a cooling tower, wet bulb temperature of ambient air is 25 and, and actual temperature is 30. So how it will affect the performance? If the air is saturated, then what? शिवा पहले कूलिंग टावर तो समझ लो होता क्या है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. पहले थियोटिकल एस्पेक्ट देख लें. अगर आपको यही नहीं पता उस चीज का, वो चीज काम क्या करती है, होता क्या है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता, तो फिर कैसे प्रोफाइल वगैरह ड्रॉ करोगे. पेशेंस रखो, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर लूंगा. ठीक है, so I hope you guys are ready. Here we will understand the concepts, working, design, operation, applications of cooling towers, as well as their role in power plants. ठीक है, as I have told you, this is the session objective. ठीक है, and at the end I will also take question and answer. So if you guys are having some doubts, still we will discuss. Don't worry. ठीक है. So at the end of this session, you will be able to understand the fundamental concepts of cooling tower, the design principles, operation and maintenance related points, and what are the applications in nuclear plants, etc. Okay. So my first question, just want to see, please participate in the session, answer in the chat, so that I can understand what is the level of understanding you guys have. Based on that, I will do the discussion in the session. Okay. Like you guys must have seen cooling towers. Definitely आपने देखे होंगे. So above the cooling towers, you see sometimes clouds or mist type of things or the smoke. Okay. So why we see those things? शिवा, अगर आप इतना सीरियस होते बार के इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू से एक दिन पहले मुझसे नहीं पूछते. हम तो डेली सेशन ले रहे हैं. आपका मेरे पास पिछले किसी सेशन में कमेंट नहीं है. मैं हर सेशन में मेंशन करता हूँ, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे मेंशन कर दो कमेंट में. ना आपका कोई मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे है. आई कैन अंडरस्टैंड आप इम्पेशेंट हो, बट जो मैं अपना सेशन लेके आया हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा ना. आपको अकॉर्डिंग करने के मैंने चांस बहुत सारे दिए आप लोगों को, और जिन लोगों का आगे इंटरव्यू उनके लिए भी चांस है भाई. कमेंट में आप लोग टॉपिक्स मेंशन करो, आई विल कम विद द वीडियोस. और इफ नॉट मी, देन एनीवन एल्स फ्रॉम आवर टीम इन अन अकेडमी विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो. जैसे आपने देखा होगा कल पूनिया सर ने इवेपोरेटर पे वीडियो ली थी, उससे पहले अंकुर सर ने वीडियोस ली थी. मनीष सर भी वीडियो ले रहे हैं, तो सब ले रहे हैं. तो क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी सी द क्लाउड्स और मिस्ट इन नियर द इंडस्ट्रियल टावर? अभिषेक, मैंने फर्स्ट सेशन में ही बात की थी पॉइसन सेपरेट मेथड के बारे में. जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था, किसी ने मुझे रेस्पॉन्ड ही नहीं दिया. टेलीग्राम में भी मैंने पूछा था, तो फिर वो सेशन हुआ ही नहीं. आप टेलीग्राम पे या कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल कम. लाइव चैट याद नहीं रहती है ऐसे. ठीक है. मे बी समथिंग बर्निंग एट द बॉटम ऑफ. अरे नहीं हर्षिता, कूलिंग टावर में कोई बर्निंग की प्रोसेस नहीं होती. कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी आपको दिखाया तो कूलिंग टावर जस्ट लाइक अ नॉर्मल हीट एक्सचेंजर. द ओनली थिंग इज हेयर हॉट वाटर इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, दैट्स इट. कोई बर्निंग कुछ नहीं है. मे बी एट स्कूल यू गाइस हैव डन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने स्कूल में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल लेवल पे, या अभी भी आप कर सकते हो अगर नहीं किया हो तो. सपोज वी हैव सम ट्रांसपेरेंट बॉटल,
transparent water bottle, like you can see. Similarly, some transparent water bottle, proper transparent, no color, like यहाँ पे तो color है white. ठीक है. Fill some hot water in this. Hot water means hot water near the boiling point temperature. Okay. And then cover the top with some plate. Metal plate would be better, or any plate which have the high thermal conductivity. Now put ice cubes at the top of this plate. ठीक है. So what will happen? You will see, since this was the hot water, so there will be vapors above this. And when these vapors will come in contact with the ice, they will start to get condensed. Vapor will condense. Okay. And when vapors will condense here, so what will happen? All those condensed molecules, tiny, tiny condensed molecules, will form a group kind of thing. And you will be able to see a mist or a cloud formation inside the jar. Correct. तो ये जो कूलिंग टावर्स हैं, इनमें जब आपका हॉट वाटर एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट and move into the air. And in that process, those water vapor molecules, when they condense, so they are visible in the form of clouds or mist. I hope you guys understand the difference in clouds, mist, fog, etc. Dew and all. उस सब पे हम नहीं जा रहे. ठीक है. बट वो भी एक क्वेश्चन है. ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, नॉर्मल मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर में इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. द डिफरेंस इन फॉग, मिस्ट, अगर आपका डिस्कशन इंटरव्यू का कुछ उस एस्पेक्ट की तरफ जाता है तो यू शुड नो दीज थिंग्स. ओके. सो दिस इज द आंसर. The clouds or the mist we see near the industrial cooling towers, they are basically due to the condensation of water vapors. They are not smoke or pollution. ठीक है. जैसे आपने बोला ना बर्निंग होती है या कोई पॉल्यूशन है ना, they are basically due to the condensation of water vapors. The water vapors present in air or some in the gases, they get condensed in or outside the cooling tower, at the exit of the cooling tower, and those are visible. Okay, in the form of clouds or mist, you can say. And now the question is, ये form क्यों होते हैं? So I have already told you. Hot water vapors released from the towers, because it is also possible that all the water molecules which are getting evaporate are not going in air. Some may leave as it is. If air becomes saturated, then air will not be able to absorb more water vapor. So what will happen to those water vapors which are not getting absorbed by the air? They will get condensed in the form of mist or clouds. Okay, this is the answer. Okay, उसका एक experiment भी है, mini cooling tower experiment, which I just explained. Maybe you have done in your school days also. You will be able to see this. Hot water, ice, you can see this, clouds or mist. I hope it is visible. Okay, now let's understand what is cooling tower. So cooling tower is a device which is used for the heat rejection purpose, or extract the waste heat, or you can say excessive heat from the processing stream, process streams or process water, you can say, by allowing the partial evaporation. ठीक है. पार्शियल इवेपोरेशन की हेल्प से हम उसे करते हैं, जिसे आप बेसिकली इवेपोरेटिव कूलिंग भी बोल सकते हैं.
Now the question is why it is needed. I have explained to you already at the start of the session. Okay, like in power plant, condensers must reject the latent heat. In HVAC systems, heat absorbed from room must be expelled. Chemical reactors need temperature control to avoid runaway reactions, etc. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, वेयर वी यूज एक्सेसिव मैसिव साइज ऑफ टावर्स टू रिलीज दोज हीट्स. ठीक है, आप समझ सकते हो. इन पावर प्लांट्स, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. Okay, so there what is happening? Very large amount of electricity is getting produced with the source of another, with the help of another energy sources, in which chemical reactions taking place, like combustion reactions or nuclear reactions, etc. So there, excessive heat, the waste heat will be in very large amount, huge amount. That's why the size of the tower shall be large as well. Why, you will understand. ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो. If you want to remove small amount of heat, then size of the cooling tower will be small. And if you need to remove large amount of heat, basically the cooling duty or heat duty you can say, तो जितना ज्यादा heat duty होगा उतना ज्यादा ही size होगा. As I told you, without cooling, systems will overheat. That can cause the damage to the equipments, or the and it can cause the inefficiencies of the processes. Okay, like you can see what happens. See, this is the idea. Like this is the cooling tower. Suppose the hot water is entering here, then this hot water will be sprayed in a large chamber. We spray the hot water, like we rain that hot water. Okay. And from the other side, air is coming, ambient air. So this air, since you are using the spargers, spouts to spray the hot water over the air, so you can understand the contact area will increase between the air and hot water. Because of that, some of the hot water molecules may vaporize. So, if due to the evaporating cooling concept, which I explained in the session of humidification and dehumidification, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैं इवेपोरेटिव कूलिंग एंड वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं अगर आइडिया नहीं है तो. ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा टीम को बोल के. तो due to the evaporative cooling, some of the liquid molecules from hot water will evaporate, and thus the temperature of hot water, that liquid bulk, will decrease, and that cooling water, cold water, we produce here. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, because some amount is getting evaporate, some amount is going in the air, so there will be a loss of water. So that's why we will add one makeup stream. अगर suppose 100 kg hot water enter हुआ per hour, and here you are getting only 97 kg of cold water, so 3 kg per hour का loss हुआ, so that 3 kg per hour of water we will make up. Okay, and some water may loss due to the blow down as well. Process calculation में आपने पढ़ा होगा blow down streams and all, ये सब क्या होता है. ठीक है, तो जो एयर, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक फैन लगा हुआ है टू विथड्रॉ द एयर. जैसे आपके एयर कूलर्स होते हैं, एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, एग्जॉस्ट फैंस क्या करते हैं, किचन में, बाथरूम में, घर में, रूम में एग्जॉस्ट फैंस होते हैं. एग्जॉस्ट फैन just suck the air from the room and send it to the outside. Similarly, these fans are sucking this air and throwing outside. So that's how the cooling towers work. I have explained, written each and everything. And apart from that, जैसे आपने पढ़ा होगा packet bed columns, fluidized bed columns. Similarly, in cooling towers also, we can use fillers. जिसे आप फिल मीडिया भी बोल सकते हो. ठीक है, फिल मीडिया हम यहाँ यूज कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन दैट वी क्लासिफाई द कूलिंग टावर्स इन सेवरल कैटेगरीज. वो भी हम आगे देखेंगे इस सेशन में. ठीक है, तो व्हेन porous particles, bad particles are there, and two streams are there, hot water, ambient air, so interfacial area will increase further. Correct? So they are the filling media. This is the working principle of cooling towers. Hot water enters from one side, from the top, air flows from the bottom or the top.
depending on the flow, it is counter current, cross current, or co-current. As water droplets interact with the air, a small portion of this water evaporates, and because of that, they require latent heat. So they will absorb that latent heat from the bulk and it become cool. Okay, तो जो remaining water है वो cool हो जाएगा. So this is the energy balance. You know, the latent heat required by the molecules to evaporate is m lambda. And what is the sensible heat loss of the cold water, hot water is this. Based on that, you will do the energy balance and all. Okay. Psychrometry role. Air at a given dry bulb temperature absorbs the moisture until the wet bulb temperature is reached. ठीक है. मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वेट बल्ब टेम्परेचर का. आई होप आपको क्लियर है. अगर किसी को आइडिया नहीं है तो बता देना. मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. नो इश्यू. अदरवाइज उस सेशन में आप देख सकते हो वहां प्रॉपर डिटेल डिस्कशन किया है हमने कि वेट बल्ब टेम्परेचर और कब अचीव होता है. ओके. तो ये जो एयर आपने यूज की है कूलिंग टावर्स में, ये याद रखना. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन कूलिंग टावर्स द एयर will absorb the water. So till what limits it can absorb the water. क्या अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक एब्जॉर्ब करेगा? मतलब क्या 100% सेचुरेट हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी ये जो एयर आउट हो रही है उसकी यहाँ पे? नो. ये जो एयर है इट विल एब्जॉर्ब द वाटर वेपर दोज मॉइस्चर until the wet bulb temperature is reached only. ठीक है. And the moment wet bulb temperature is reached by the air, after that it will not absorb further moisture. So all those extra water vapors they will release as it is, which will condense and you see them in the form of mist or clouds. Okay. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ. सपोज ड्राई बल्ब टेम्परेचर हॉट वाटर एंटर्स एट 40 डिग्री. Okay. Suppose hot water enters at 40 degree, leaving at 30 degrees Celsius. And the wet bulb temperature of air is 25 under the given conditions. So that means the evaporative cooling is taking place. Okay. Because the cold water which is leaving, they ask, what is the lowest possible temperature of cooling water coming out? जो हमारे कूलिंग टावर्स हैं उनमें जो कूलिंग वाटर आपका बाहर आता है, ठीक है, these are the cooling towers. Here, hot water enters, let's say 40 degrees Celsius. Here, the cold water is getting produced, or cooling water, you can say. Okay. Suppose this is the air. Having wet bulb temperature of 25 degrees Celsius. Correct. So they ask, what is the lowest possible temperature of this? ये जो कूलिंग वाटर आउट हो रहा है ये लोएस्ट कितना टेम्परेचर अचीव कर सकता है? दैट इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर. Cooling water which is coming out can achieve maximum lowest minimum of wet bulb temperature. उससे below नहीं जा सकता. But this is the ideal scenario. This is the ideal scenario. In case of practical scenarios, in reality, this has to be the exit temperature of cooling water has to be more than the wet bulb temperature, which is I have mentioned in this example. Is it clear? Why that we will discuss. But for now, this point is clear to all. Hello. Are we clear on this? Yes or no? Guys, this session is for you. अगर आप respond नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा? If there is any doubt or any confusion, I will explain. Tell me. Otherwise मैं एक recording करके भी डाल सकता था. But I want all of you to have better clarity.
ठीक है। देखो होल आइडिया क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको लिंक भी शेयर दे ही देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो फॉर यू पीपल, हियर आई हैव, क्या हो रहा है? हाँ, ओके। आई हैव शेयर द लिंक इन द चैट एज वेल, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, देखो एक बेसिक आइडिया देता हूँ। दिस इज द लिंक ऑफ द सेशन ह्यूमिडिफिकेशन वेयर आई एक्सप्लेन वेट बल्ब टेम्परेचर इन फुल डिटेल। See, understand like this. This is air, okay, at dry bulb temperature. Now understand, if it comes in contact with a small amount of water, then the air film gets saturated and it will become steady at wet bulb temperature. Only air film will be saturated, not the bulk of air. But if it comes in contact with large amount of air, very extremely large amount of air, then then only it will achieve the dew point temperature. Means the bulk of air will be in equilibrium. Bulk of air will be saturated. Okay, that is the whole idea. तो यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं ambient air we are using such a large quantity and how much water we are using? Very small. This much water is not sufficient to saturate the entire air. So obviously in this case the lowest possible temperature will be wet bulb temperature only, not the dew point temperature. But instead of this stream, suppose if you use ocean, sea, a huge, tremendous amount of water. In that case, this bulk of air will also be able to get saturated. In that case, the lowest possible temperature will be dew point temperature. Okay, this is the brief idea कि why wet bulb temperature. This is the reason. अभी आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा था लास्ट सेशन में भी, जब एसी वाला मैंने किया था कल परसों, कोई पूछ रहा था कि जो सर when we have sweating, when sweating is there, then what is the temperature? You know, when we sweat, mm, the moisture comes from our body through the pores on the here on the surface on the skin, and when it comes in contact with air, we feel little cold. होता है ना? When you are sweating and if wind flows, you feel like wow. It's not the cold breeze. It is basically the liquid present on your skin. Evaporative cooling is taking place. That's why you are feeling that cold, because the temperature of liquid is decreasing. And what is the lowest possible temperature there? Wet bulb temperature. Because that sweat is not able to saturate the entire bulk of air. So it will saturate only air films, which means WBT. I hope it is clear. Okay. Now further, step by step process, one by one, I have explained how evaporative cooling occurs, what is happening. Okay. Hot water enters in the tower, then water is sprayed over the fill media, like bed columns and all. Here we instead of saying bed columns, we use the term fill media. Understand? But the working is similar to increase the interfacial area. Now evaporative cooling takes place, which you guys already know what is that. And in this process, 5 to 10% of water evaporates usually, and then absorbing the latent heat from bulk only, and thus the remaining liquid as cooled water will leave. Okay.
The science behind it, latent heat transfer and wet bulb temperature limits. You know all that. I have explained to you. Okay. Now let's talk about the classification of cooling towers. How many types of cooling towers are there? Okay. So we can classify the cooling towers on various methods, like by airflow generation. If you see, so there are two types of cooling towers. One is natural draft, second is mechanical draft. Further, mechanical draft cooling towers you can classify in two categories: induced draft and forced draft. ठीक है, तो नेचुरल ड्राफ्ट क्या होते हैं? बाय एयर फ्लो जनरेशन. तो इन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स, they work on the natural convection of the circulate air which is getting circulated. Okay, driven by the temperature difference, or the density difference, stack effects, basically the density difference. Okay, you can see this is the natural draft cooling tower. How they work: hot water enters, sprayed. You can see these are the fill media. Here enters and air enters from the surroundings. Air is sucked. Then normally air will move upward due to the density difference. Okay, natural circulation. This is the details. You can see natural draft cooling tower used buoyancy through a towering chimney. This entire structure which you see made up of concrete, that is the towering chimney. Warm humid air usually rise due to the humid air. When moisture will evaporate from the hot water, it will go in the air. So humidity of air will increase and it will become little warm as well. Okay, so this warm air will rise due to the density difference. Okay, as compared to the air which is outside, which is less humid. Obviously, after entering, it will getting humid now. So this humid air will move and the pressure will vary. All that stuff. How convection occurs. Then induced draft cooling towers. Mechanical draft cooling towers, when we air don't flow naturally, we are using some external force like fans or something, okay, to induce the air in the tower. So there are two types of them: induced draft and forced draft. Induced draft are those where fans are located at the top of the tower, cooling the air upwards. Okay, just like the exhaust fan, they are pulling the air from the room and sending outside. Forced draft cooling towers are those in which fans are located at the base of the tower, means at the bottom. They are pushing the air, just like the ceiling fan. Ceiling fan is pushing the air downward, like this. You can understand. I hope it is clear. Okay, so this is what your induced draft cooling tower. Here, the fan will be somewhere at the top. Like I show you the diagram initially, this one, as you can see, it is for induced draft cooling tower. Okay, and the process, everything else is same. How air enters, hot water enters, what happens inside this, cooling water relief and all. सॉरी, यहाँ मैंने शायद थोड़ा उल्टा लिख दिया ना. ये डायग्राम गलत है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये डायग्राम गलत है गाइस, सॉरी. मैं इंड्यूस ड्राफ्ट का डायग्राम ले आया आपके लिए. ये फैन यहाँ नहीं होता, फैन बॉटम में होता है. वी वर राइट. इंड्यूस में टॉप पे होता है और फोर्स्ड में फैन बॉटम में लोकेटेड होता है. सॉरी, आई मिस्टोक. बट एवरीथिंग एल्स विल बी सेम. बॉटम में यहाँ, at the base of the tower. And everything else is same. The working and everything. Okay.
Next, types of cooling tower based on heat transfer media. एक क्लासिफिकेशन मिस हो गया. वेट और ओपन सर्किट, ड्राई क्लोज सर्किट और हाइब्रिड. तो वेट और ओपन सर्किट कूलिंग टावर्स आर दोस इन विच वाटर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद एयर, जैसे अभी तक हम ये देख रहे हैं. ओके. ड्राई और क्लोज सर्किट कूलिंग टावर्स आर दोस वेयर वाटर does not interact with the air directly. It interact with the help of some unit heat transfer surface or something. And hybrid is a combination of wet and dry cooling towers, जहाँ पे हम दोनों concept use करते हैं. Heat exchangers surfaces as well as the evaporative cooling concept. Other considerations are climate cooling towers, closed circuit cooling towers, open circuit cooling towers, square cooling towers, as you can see. उसमें कुछ ज्यादा वो बड़ी चीज नहीं है. I will share a handout with you people till tomorrow. Okay. Regarding the classification of cooling towers, so you will be able to understand from there, and I will make sure कि diagram इस बार correct हो. मेन जो डिस्कशन होता है वो इन्हीं दो के ऊपर होता है, इंड्यूस्ड एंड मैकेनिकल, इसलिए इसकी मैंने अलग से स्लाइड्स भी आपको दिखाई हैं. बाकी सबका ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होता, पर उनका आइडिया होना चाहिए, तो वो मैंने बस आपको ब्रीफली बता दिया है. नाउ द की कंपोनेंट्स, की टर्म्स एंड द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स वी यूज इन कूलिंग टावर्स. ठीक है. तो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, दे आर लाइक रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस एंड एल बाई जी रेशो, मतलब लिक्विड एंड गैस रेशो. ठीक है. तो रेंज क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन यू कैन सी. Hot temperature minus cold temperature indicate the amount of cooling done, basically of water. Temperature of hot water minus temperature of cooling water which is produced. Approach क्या होता है? That is the temperature difference between cooling water and wet bulb temperature of air. Effectiveness is the ratio of range divided by range plus approach, as you can see. High effectiveness means better performance. Range indicates signifies the amount of cooling done. Approach signifies how close we are to the ideal limit. Okay, as the name suggests, approach. This approach to this. Approach to ideality. Ideal limit, or you can say theoretical limits. Okay. L by G ratio is basically the ratio of liquid flow rate to the air flow rate. This is a design parameter we use for the heat transfer area and all. Just like gas absorption, L by G ratio you use to calculate in the designing of packet bed columns. Same here. And there are some other terminologies like losses are there. Like one is drift loss. What is drift loss? When water droplets carried away with air. So air move कर रहा है. If air carry the water droplets along with it, so it is what we call drift loss. Okay. Evaporation loss. You know, water is getting vaporized, and if it is not, how much water is evaporated? Not in air, but other than air, in the form of water vapor only. Okay, like in the form of mist or something you can say. So this is generally the 1% of the circulating water. मतलब अगर आपका 100 kg water evaporate करा है, आपने send किया है, तो almost 1 kg loss हो जाता है. हमने पढ़ा था पीछे 5 to 10% evaporative cooling होती है, उसमें जो 1% part है वो ऐसा vapors loss हो जाता है, बाकी air में चला जाता है. That's how you can understand. Blow down loss means it is basically to maintain the water quality. Water should not be contaminated. The water quality to maintain is very important. Physical significance, you all that you know. Okay. इस आप टेम्परेचर प्रोफाइल की टर्म्स में भी ऐसे देख सकते हो कि लाइक इफ यू हैव टू मेंशन दैट this thing will help you to draw the temperature profile. Like someone was asking, sir, temperature profile. This performance parameters will help you to draw the temperature profiles. Okay. The wet bulb temperature, lowest possible temperature, temperature of cooling water out, temperature of hot water in. So the difference between hot water and cooling water is the range. The difference between cooling water and wet bulb is the approach.
Okay, I have mentioned what is range, what is approach, what is the cooling tower effectiveness. So you can see, I have told you already. Apart from that, there are some other parameters also like cooling capacity. It is basically the heat rejected in kilocalorie per hour or TR. You know TR, tons of refrigeration. So when you explain the terms in these two units, only then it is called cooling capacity. जैसे evaporator में evaporator capacity होती है in kg per hour. Here cooling capacity is in kilocalorie per hour or tons of refrigeration. Evaporation loss, the water quantity evaporated for cooling duty and theoretically. जनरली जो इवेपोरेशन लॉस है वो आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. Evaporation loss in meter cube per hour is usually 0.00085 multiplied by 1.8 times of circulation rate, obviously of water, into T1 minus T2. Cycles of concentration, COC. This is the ratio of dissolved solids in circulating water to the dissolved solids in makeup water. जो makeup water आप अलग से भेजते हो उसमें. Blow down क्या होता है? Blow down losses basically depends on the cycles of concentration. This one. And the evaporation losses. और वो होता है आपका evaporation loss divided by COC minus 1. Then liquid gas ratio. This is the ratio between the water and air flow rate, mass flow rates. Okay, you know, if you do energy balance, ह्यूमिडिफिकेशन में वेट बल्ब टेम्परेचर के जो एनर्जी बैलेंस में आपने पढ़ा होगा, इस तरह के कुछ रिलेशन हमें मिलते हैं, लाइक लुइस रिलेशन एंड ऑल आपने देखे होंगे वो सब. ठीक है, तो बेस्ड ऑन सेम मैकेनिज्म वी विल गेट दिस रिलेशन. मैंने डायरेक्ट लिखा है, वो सब डेरिवेशन वगैरह यहाँ हमने नहीं कर रहा इस सेशन में. वो आप लोगों को जानना है तो बता देना, अलग से मैं एक सेशन ले लूंगा फॉर द प्रोसेस डिजाइनिंग एंड मैकेनिकल डिजाइनिंग ऑफ कूलिंग टावर्स, जस्ट लाइक आई डिड फॉर CSTR लास्ट वीक. Okay. In that session, we discussed about the process and mechanical designing of the CSTR. ये तो हो चुका है. Now the key components and their role in the cooling towers. तो की कंपोनेंट्स हमारे फिल मीडिया होते हैं. इनका फंक्शन होता है एयर वाटर कॉन्टेक्ट एरिया को इंक्रीज करना. ये 3 टाइप्स के होते हैं जनरली जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में. स्प्लैश फिल, फिल्म फिल, सॉरी 2 टाइप्स के. स्प्लैश फिल आपके ये वाटर को ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करते हैं, और फिल्म फिल जो होते हैं ये वाटर फिल्म फॉर्म करते हैं ओवर द सर्फेसेस. दैट्स हाउ द एयर विल कम इन कांटेक्ट विद देम, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर फिल्म. ठीक है, तो जो स्प्लैश फिल होते हैं ये आपके लेस एक्सपेंसिव होते हैं एंड लेस एफिशिएंट होते हैं. बट जो फिल्म फिल होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं बट हाईली एफिशिएंट होते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स or thermal power plants, which fill media you will prefer? So you can easily answer film fill media for high efficiency. Correct? ये क्वेश्चन भी था, मैंने आपको दिखाया था कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस. जनरली जो मटेरियल होता है वो आपका पीवीसी फिल्म होती है इन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, विच improves द एफिशिएंसी बाय 30%. मतलब अगर आप नॉर्मल स्प्लैश फिल लोगे या उसकी जगह पीवीसी फिल्म फिल लोगे तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 30% से इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होते हैं. हम बात कर रहे हैं की कंपोनेंट्स की. ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द वाटर ड्रॉपलेट्स escaping with air, as the name suggests. Drift loss of water droplets are going along with the air. So if you like some filter medium or porous media or a sheet we are using to eliminate this. ठीक है, ये वाटर का लॉस रिड्यूस करने में हेल्प करता है. अदरवाइज अगर वाटर लॉस हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ कैरी हो रही है, तो आपका मेकअप वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इज नोजल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, which has the function of water distribution over the film media. That spray. Example is rotary nozzle they are using in HVAC towers, prevent the dry spots. Okay, so these are 3 main key components and their functions.
इसके अलावा बात आती है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कूलिंग टावर परफॉर्मेंस. So factors that affect the cooling tower performance are many factors. Like one is wet bulb temperature of ambient air. Its impact. Cooling towers cannot cool the water below the ambient wet bulb temperature. So high wet bulb temperature means low cooling efficiency. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनता है आपका, जैसे सपोज आई हैव two cooling towers similar. One is used in coastal areas like Mumbai, Kolkata, Chennai, and one is used in some dry places like Delhi, Rajasthan, etc. Okay, so where the efficiency of cooling tower will be high, where the performance of cooling tower will be better. So you can understand coastal area means high wet bulb temperature. That means low efficiency. क्योंकि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर हाई है तो जो कूलिंग वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी तो आउटलेट टेम्परेचर ज्यादा ही होगा. And if wet bulb temperature is low, then the temperature of cooling water leaving will also be low. I hope it is clear. And how can we improve it? We can use large towers or hybrid cooling systems. ठीक है, इसीलिए अब ये भी आता है जो सर साइज होता है ना कूलिंग टावर्स का, चिमनी का, कोस्टल एरियाज में कूलिंग टावर्स का साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिल्ली राजस्थान साइड. वहां पे कूलिंग टावर्स का साइज ज्यादा नहीं होता. व्हाई? दिस इज द रीजन. बिकॉज इफ वेट बल्ब टेम्परेचर इज हाई, देन डेल्टा टी जो रेंज है T1 माइनस T2, अभी हमने पढ़ा था रेंज, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, वो कम होगा. और जब रेंज कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तो हीट ट्रांसफर रेट भी कम होगा. दैट मीन्स वी नीड लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया. दैट्स व्हाई द साइज विल इंक्रीज. आई होप इट इज क्लियर. यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स. सेकेंड होता है वाटर फ्लो रेट. हाई फ्लो रेट विल रिड्यूस द कॉन्टेक्ट टाइम. यू नो दैट मीन्स पुअर हीट ट्रांसफर. लो फ्लो रेट will cause uneven distribution. ठीक है, मतलब मेरे पास ये स्प्रेयर है, स्पाउट है, जिसमें मैं वाटर स्प्रे करना चाहता हूँ. सपोज बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी उस पर एंटर हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म, अनइवन. But if it is coming in large amount, so uniform distribution is possible. So we have to maintain the flow rate. It should not be very high and it should not be very low as well. There should be some optimum flow rate. ये मतलब how much cooling hot water we can handle. Okay. Air flow rate, if air flow rate is insufficient or low, so evaporation will be less. Because if water comes in contact with less amount of air, so less molecules will evaporate. And if large amount of air के साथ आते हैं, तो large air molecules will evaporate. So air flow rate is also one important parameter, because very high air flow rate can cause drift loss, energy waste, because बहुत ज्यादा temperature reduce हो जाएगा. और ये सारा जो एनर्जी टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, तो वो सारा एनर्जी कहाँ जा रहा है? एयर में जो डंप कर रहे हो आप, तो एनर्जी वेस्ट हो गई ना एक तरह से आपके लिए. तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं. दैट्स व्हाई L/G रेशियो इज वन वेरी क्रूशियल परफॉर्मेंस पैरामीटर. नेक्स्ट इज फिल्म मीडिया. जो आपका फिल्म मीडिया है उसकी कंडीशन. इफ इट इज कोरोडेड, तो एयर फ्लो विल बी choked. If it is clogged or some fouling occurs, or let's say scale fill over that, the surface area will reduce. Effective surface area, that will reduce the approach temperature, obviously. Just like heat transfer equipments, if fouling occurs, what happens? Heat transfer area will effective heat transfer area will reduce. That will affect the rate of heat transfer, basically the temperature range. ठीक है. और hot waters में fouling is very common issue. That you have seen that in heat transfer. Next, water quality.
तो जो water you are using, it should we should be maintaining the quality of that. Generally, the TDS of that water should be below 50,000 ppm. You know, TDS, total dissolved solids. pH should be somewhere 6.5 to 8. क्योंकि pH अगर 6 से कम होगा तो low pH means high corrosion. Acidity will be more. Or high pH means scale formation, basic. Fluoride content should be less. Okay. Otherwise, they can damage the metal parts of the equipments. Heat load, it should not be very high, because very high heat load means high temperature for the cooling water leaving. That will lead to process failure and all. So that's how you can see there are many other parameters: approach temperature, drift losses, maintenance practices, tower design, etc. ठीक है, ये उनकी समरी है जो मेन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, like high wet bulb temperature, clogged fill media, poor quality of water, and incorrect airflow. These are four main para factors, and one is liquid flow rate. So these are five main performance parameters. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। और आप लोगों का जो ये यूट्यूब सेशन है फॉर यू, की टेक अवेज फॉर यू, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज द अल्टीमेट लिमिट हेयर, and we it cannot go the cooling tower cooling water temperature cannot go below this. Water quality is important, otherwise scaling corrosion problem can affect the system, that will lead to the poor efficiency. Maintenance should be very high, money बच जाएगी, ठीक है। Even you can understand a 5% rise in the approach temperature can affect can increase the energy cost by double. Approach temperature क्या था? Difference between cooling water outlet minus WBT. ठीक है, अब आपको अगर वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए डिजाइन करना है, लाइक ह्यूमिड एरियाज वेयर ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, कोस्टल एरियाज लाइक दिस, प्लस अदर पैरामीटर्स, सो oversized towers we will use. So these are the things, guys, key takeaways. आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने प्रोसेस डिजाइनिंग एंड मैकेनिकल डिजाइनिंग ऑफ टावर्स डिस्कस नहीं किया है, वो एक सेपरेट सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू गाइज नीड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट। ओके, otherwise that will be all for this session. Now if you guys have any doubt, so we can discuss. Thank you, this is all from my side. Now tell me if you guys have any doubt, we can discuss that. Okay, otherwise you can join the Telegram channel, link you can find in the description, or if you have my WhatsApp contact, you can WhatsApp me and you can ask your doubts later on if the people watch the recordings or something. ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए जब तक आप लोग डिसाइड कर रहे हो अपने क्वेश्चन, मैं एक इन्फॉर्मेशन पास कर देता हूँ। आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो लोग गेट और पीएसयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फॉर देम अनअकैडमी इज स्टार्टिंग अ न्यू ऑफर। दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन इन जस्ट 8,999 प्राइस, 60% का ऑफ है, विच इज वैलिड टिल 29 मई। दे कैन यूज माई एजुकेटर कोड ACE009। ठीक है, और जो गेट 25 के रैंकर्स हैं, if you want to prepare for gate 26 for extra rank improve for rank improvement or something, then some special discounts are going on for you people as per your rank, you can see. ठीक है, बाकी हमारे नए बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। इवन यू कैन सी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ATC का पोस्ट आया, उसके लिए बैचेस चल रहे हैं। 28 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट एंड PSUs प्रिपरेशन। ओके, तो दिस इज आवर टीम, यू कैन सी
अंकुर सर, देवेंद्र सर, मनीष सर, मी, गुलपाल sir, Aman sir. So these are the few details. So I hope the session was helpful for you and you were able to understand what is cooling towers, how they work, and the content. क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो पॉइंट इज कूलिंग टावर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत सारा है, ठीक है। बट आपको जो पढ़ना है सिर्फ इतना पढ़ना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज यू आर बीटेक इंजीनियर्स, नॉट PhD holders or MTech holders. If you are MTech holders, then definitely you need to learn some extra points as well. Sir, I will share the Y size of large. जैसे आपको बताया ना, हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा होगा। हीट ट्रांसफर में क्या होता है, समझो क्या। जब मैं जैसे हीट एक्सचेंजर्स वगैरह की बात करता हूँ, तो हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, हीट ड्यूटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर बाद में इसकी हेल्प से आप हीट ट्रांसफर एरिया कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, इफ वी हैव द ह्यूमिड रीजन or the coastal areas, then the wet bulb temperature will be relatively high. And if wet bulb temperature is high, then you can understand the temperature of cooling water out will also be high, because it cannot be below WBT. So it will be high as well. मतलब अगर W wet bulb temperature 40 है तो ये हमारा more than 40 होगा। और अगर ये high है तो you can understand the hot water जो enter हो रहा था minus ये जो temperature out है, this difference will be low. And if range is low, so you can understand this is what we call range. अगर range low है तो you can understand heat transfer area should be large. Yes or no? और heat transfer area large करने के लिए हम क्या करेंगे, large size towers use करेंगे. So I hope it is clear. Any other doubt? Sir, why it cannot go beyond the wet bulb temperature? Okay, Darshana. Because air will become air which is in contact with the liquid. Film theory पढ़ा होगा आपने mass transfer में ना? So when air and liquid are in contact, so you know there will be a film. So जो air film है that gets saturated. So it cannot absorb more and more water vapors. And the temperature of this air film will be the wet bulb temperature. तो जब ये और ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो और ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होंगे, और जब और ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं होंगे तो लिक्विड बल्क का टेम्परेचर भी फर्दर डिक्रीज नहीं करेगा। And you know liquid bulk in contact with the air film, so if they are in contact, so there will be a thermal equilibrium. So temperature of air film is wet bulb temperature. So what will be the temperature of liquid in equilibrium with this, at wet bulb temperature? This is the theoretical ideal scenario, but practically we know temperature of liquid will always be greater than the WBT of air. I hope it is clear now. Okay, any other doubt? बाकी पेट्रोल टेम्परेचर को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने एक सेशन लिया था 3 मई के आसपास। ओके, तो मैं उसका भी लिंक यहाँ आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। आई हैव पिन्ड इन द लाइव चैट, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी जा सकते हो और सेशन देख सकते हो। अदरवाइज, एंड आई विल आस्क द टीम टू do those discussions in the do add the link in the description as well. Okay, so clear everything? Any other doubt?
Any doubt, guys? No? Then we will wrap up the session here. बाकी मैं एक बार चेक चेक कर लेता हूँ ऊपर किसी का कोई डाउट मिस हो गया हो तो. Okay. So that's all for the day, guys. In that case, no other doubt I can see. So see you. मिलते हैं next time. Till then, bye bye. Take care. Have a great day ahead.